क्यों डॉक्टर राधाकृष्णन ने चाइना के ऑफिशियल टूर पर माउथ से तुम के गाल को छूकर प्रोटोकॉल तोड़ा? क्यों डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने बर्थडे को टीचर्स डे मनाने के लिए कहा? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनको कि हम आज डिस्कस करेंगे मेरे साथ यानी दीप्ति के साथ, दीप्ति के झरोखे से। वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। A very happy Teachers Day to all the dedicated and lovely teachers all over the globe. The teacher is not only the one who forces the facts into the mind of a student, but the real teacher is the one who prepares him for the challenges for tomorrow. Rightly said Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. A teacher in Sanskrit means Guru. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ऐसे हैं गुरु। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गु प्लस रू। गु मतलब डार्कनेस, इग्नोरेंस, एंड रू मीन्स लाइट, नॉलेज। अ गुरु इज द वन हु डिस्पेल्स डार्कनेस एंड ब्रिंग्स अस द लाइट ऑफ नॉलेज। As we all know, that Teachers Day is celebrated on 5th September every year. But why? Because it is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. ये तो बहुत सिंपल सा जवाब हुआ, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा हुआ एक बार कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे था और उनके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके बर्थडे को एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट के रूप में मनाना चाहते हैं. सो दे वेंट टू हिम टू टेक परमिशन. उन्होंने कहा ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन उन्होंने कहा मुझे ज्यादा खुशी तब होगी अगर जो और जितने टीचर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अगर उनके लिए भी एक सम्मान का दिन बन सके. अगर आप लोग मुझे सोचते हो कि आई एम अ गुड टीचर, मे बी आई एम, पर जो कुछ भी मैं करता हूँ आई डू इट विद अ पैशन. बिकॉज उनका ये मानना था टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री. तो उन्होंने कहा अगर सच में आप मेरा सम्मान करना चाहते हो तो विश्व भर की सभी टीचर्स का सम्मान करने का इस दिन को अगर हम बना लें, so I'll be more than happy and this will be the best gift that you can ever give me. And since 1962, his birthday 5th September has always been celebrated as Teachers Day. He was born in 1888. After his graduation, he did his masters in philosophy. और वो भी फिलोसफी सब्जेक्ट उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनका एक रिलेटिव था जिसने एमए किया था फिलोसफी में और उनकी बुक्स उनको फ्री में मिल गई थी. सो ही थॉट टू यूटिलाइज द नॉलेज इन दोज बुक्स एंड डिड एमए इन फिलोसफी. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was a very bright student since childhood. But in the Brahmin families during those days, there was a custom of early marriage. जिसकी वजह से he got married as early as 16 years of age and जिससे शादी हुई the girl was just 10. Later on, he became the vice chancellor of many universities which includes Andhra University, BHU and Delhi University. Dr. Radhakrishnan founded a non-profit organization, Helpage India, for elderly and underprivileged children. He was a teacher with very firm and friendly behavior and he was very witty, humorous, unlike philosophers. And for that I remember an incident I was reading some time back that when he was the president of India, that time the king of Greece came for an official visit. And when he went to the Palam airport to receive him, वहाँ जाके उन्होंने जब उनको वेलकम किया तो he said, Your Majesty, you are the first king of Greece who has been invited because Alexander the Great came uninvited. This was the wit and humor of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने माउथ से तुम के गाल पर हाथ रखा. ऐसा क्यों और कब? Patting powerful men on the cheek seemed to be Dr. Radhakrishnan's favorite way of disarming them. In the autumn of 1957, Dr. Radhakrishnan happened to visit China. Dr. Natwar Singh
was the Indian ambassador there, and the meeting was with the chairman, Mr. Mao Zedong. After shaking hands with the chairman, Mao Zedong, the Vice President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, flouted every rule of the protocol and patted on Mao's right cheek. The chairman was taken aback. All present people froze. But the 12 words that Dr. Radhakrishnan spoke melted all the tension. It was, "Mr. Chairman, don't be alarmed. I did the same to Stalin." The Vice President was shown great respect and courtesy. The scholars in China were much familiar with his writing, and the visit, by all accounts, was a success. I'll share an anecdote of Dr. Radhakrishnan with you. In 1949, Dr. Radhakrishnan was appointed as the ambassador to Soviet Union, and Stalin was an ardent communist. सब लोग को यही लग रहा था कि साइकोलॉजी वाले एक इंसान को वहां भेज रहे हैं, हाउ विल दे जेल टुगेदर. बट पहले ही मीटिंग में उन्होंने कहा कि इन इंडिया ऑल्सो देयर वाज एन एम्परर हु लव्ड ब्लडशेड. और इतने खून खराबे के बाद में जब उनको लगा कि अब कुछ भी नहीं है, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड बिकेम अ मंक. यू हैव वेडेड योर वे टू पावर through force. Who might know this may happen to you? Stalin smiled and said, "Yes, miracles do happen." I was in a theological seminar for 5 years. On 5th of April 1952, just a few days before Dr. Radhakrishnan was coming back to India, Stalin came to meet him, and his face was bloated. Radhakrishnan again patted his cheek and patted on his back. Stalin replied, "You are the first person who has treated me as a human being and not as a monster." There are so many things of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan which we can discuss and we can all enjoy and cherish. Ki what a wonderful teacher, a person of par excellence he was. So for all the teachers who are dedicated in this profession I don't want to say because it is more than a profession. Noble profession से भी ऊपर, it should be a passion. Teaching is a passion. I am also a teacher and मेरी teaching में ये मैं नहीं सोचती कि मेरी इतनी boundaries हैं, because teacher can teach boundlessly. उसमें वो प्यार, वो एक लगाव, केयर होना बहुत जरूरी है. And Sarvepalli Radhakrishnan is the best example whom we can follow. He always said, when we think we know, we cease to learn. जब हमें ये लगता है कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, I know, that is the time that you stop learning. And learning is a lifelong process which we should always remember. That is why we should be students all through our lives. I hope आप लोगों को थोड़ी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होंगी. जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड जिन लोगों ने कर लिया है वो दे कैन जस्ट गिव अ थम्स अप, अ लाइक बटन. एंड जैसे आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर बेटर वीडियोज. So I keep waiting for your likes and your comments as you wait for my new videos. See you next time with something else. तब तक नमस्कार.